वरुण सर, हम मैम की किताब पर इसके बाद बात करेंगे। आपका टीवी का बहुत लंबा जर्नी रही है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। टीवी और सिनेमा को अगर आप कंपेयर करके देखते हैं कि विच इज़ मोर क्लोज टू रियल लाइफ, तो आप ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्लियरली कि ऐसा है, या आप मानते हैं कि ऐसा नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट या डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड? टेलीविजन में रियल क्या है? आज तक कोई भी आप शो उठा के देखें, कंजर्वेटिवली स्पीकिंग 99.9% ऑफ द शोज वो ऐसे हैं जहाँ पे कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार है, 500 करोड़ से नीचे का किसी का बिजनेस नहीं होता। पर बड़ी कमाल चीज़ ये है कि कोई भी आदमी काम पे नहीं जाता, सब घर पे होते हैं। कोई एक कांड हो जाए, सब तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, 5 दरवाजे बोलते हैं, सारे के सारे बाहर। तो सी अब उसका जो है ना, ऐसा नहीं है, टेलीविजन बहुत बेहतरीन बन रहा था एक समय, और जितना भी हम लोग नाक बहुत से खोले, तो फैक्ट इज कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन शोज जो है वो दूरदर्शन पे ही बने। बिल्कुल। और आज भी अगर आपको हिंदुस्तान के बारे में जानना हो तो आप कोई भी दूरदर्शन का चैनल खोल के बैठ जाइए, आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद हम लोग कमर्शियल हो गए, और मैं तो खुद, क्योंकि उस समय पे कुछ एक लोगों को मैं जानता था जो कि चैनल्स में काम करते थे और ऊंची पोजीशंस पे थे, क्योंकि मैं तिग्माचू धुलिया जी का असिस्टेंट हुआ करता था, तो जो भी लिखता था उनके साथ वो स्क्रिप्ट वगैरह चैनल में ले जाने का काम मेरा होता था। तो बैठ के एक्टिंग भी उस समय कर रहा था। सो आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अगर किसी दिन किसी के पास वक्त हो, एंड यू कैन हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग कि जिन्होंने मंटो के ऊपर डॉक्टरेट करके रखी हुई है, वो मुलव्विस थे सास भी कभी बहू थी बनाने में, और अगर वो कम पड़ गया तो उसके 6 महीने के बाद कहानी घर घर की भी शुरू हुआ। मतलब कॉस्ट्यूम की पेटियां अगर बदल जाए तो भी शो चलता रहे, क्योंकि एक ही जैसा है कि आपकी अरे छत चूरी, चलो उनके सेट पे जाके शूट कराते, क्या पता चलेगा, और बाकी पता नहीं चलेगा। सो फिर लोगों को ये समझ में आया कि भाई आदमी तो टीवी देखते नहीं, औरतें देखती हैं, तो औरतों के लिए बनाओ। कभी कभी कुछ एक शोज ऐसे आते थे, वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे हर कुछ एक साल में थोड़ा सा काम करना होता था, और उसके बाद मैंने कभी लंबा शो नहीं किया। और ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? then I shouldn't be saying what I was just about to say. But I can say that probably the biggest show of my life is not my favorite show. Okay. But you spoke about Astitva. There was another show called Ek Chabi Hai Padhos Mein. Ek Chabi. The last show that I did on television, it was called Mere Dad Ki Dulhan. And वो शो इतना अच्छा तो था कि उसके बाद मुझे लगा कि अब टीवी जो है तभी करूँगा अगर इससे बेहतर कुछ आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है, तो इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं टीवी नहीं करूँगा, क्योंकि घर चलाने का हक सबको है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन टेलीविजन के पास बहुत बार बीच में मौका था कि वो अपने आप को सुधार लेता, सिर्फ कमर्शियल एंगल को दरकिनार करके दे कुड हैव मेड बेटर स्टोरीज। एंड स्पेशली लॉकडाउन में जबकि फिल्में जो है नहीं बन रही थी, हॉल्स बंद थे आपके, OTT ने जो भी बचा कुचा रॉ मटेरियल था वो उठा के और सबने जो है चला दिया। टेलीविजन कुड हैव रियली चेंज्ड in those 2 years. They made no effort to do that. So it is unfortunate, but I think if I can't really be, though I owe my success, my life to television. But saying that, I think I'll be doing a great disservice to
everybody, including my own self, if I don't call spade a spade. तो ये चीज़, ये परेशानी टीवी में रही है. प्रॉबली मैं अगर इस चीज़ के बारे में उतना सजग नहीं होता या नहीं सोचता तो मैं भी हर तरह का काम करता जो मेरे पास आ रहा था. लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो छोटी रखी हैं, कम रखी हैं, ताकि जो काम आए वो तमीज़ से किया जा सके. एंड even at the cost of being boastful, I can tell you one thing, that I did this show called Koshish Ek Asha. It released in 2000, 7th of March to be precise. And almost 20 years later, I played the main lead in Mere Dad Ki Dulhan. This usually does not happen on television. You know, two shows 20 years apart. Because television में life आपकी अब बहुत हुआ तो 2 या 3 साल, या फिर आपका एक अगर हिट शो चल गया है तो उसके बाद फिर आप इतनी रफ्तार से ऑब्सोलीट होते चले जाते हैं कि अरे यार ओवर एक्सपोज है. अब तुम 7 दिन अगर एक शो दिखाओगे तो ओवर एक्सपोज तो होगा ही होगा. मतलब लोग तो डायरेक्टर को जानने लगते हैं, एक्टरों को तो छोड़ो. सो हाँ, ये कुछ एक शॉर्ट कमिंग्स हैं उसकी, बट देन आई गेस अच्छी परफॉर्मेंस का तो अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं. Okay, this is the beginning of the book. I didn't write it like, initially my publisher was very keen that I write about my childhood from the point of, and I or Deepti Naval and all that. And I thought, no, I'm writing this. It doesn't matter बाद में मैं एक्टर बनी या मैं प्रोफेसर बन गई कहीं, या मैं किसी बैंक में काम करती या हाउसवाइफ होती, मेरा चाइल्डहुड जो था वो यही रहता. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे डोंट आस्क मी टू राइट फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ व्यू. आई जस्ट वांट टू रिक्रिएट माय चाइल्डहुड द वे आई रिमेंबर इट. सो इट्स लाइक आई ट्राई टू रिक्रिएट लाइक जो भी मेरी मेमोरी है, I wanted to be honest to that memory, and I wanted to also recreate the period from, I was born in the year 1952 and I left Amritsar in 71 when my father migrated to the US. तो जब मैं बचपन के बारे में सोचती थी, जब किताब लिखने बैठी तो बचपन के बारे में जब सोचती थी तो I used to, there was one image that would come to my head constantly. So I've started my book with that image. That I want to read, those 2 pages, page and a half. It's called Dance of the Songs. It's getting dark in the city of Amritsar. Shops are shutting down. Street lamps come on. Click na kar. Street lamps come on, casting dim yellow pools of light. Rickshaws and bicycles hustle to make their way home. A handcart loaded with gunny bags wobbles down the street. Even Dwarka's kite shop is winding up. The old Sardar tailor pulls his rickety shutter down, gets on his bicycle and pedals away. Shani's voice can be heard. She's urging her buffaloes home. Grubby little boys, the mochis, play outside in the gully, and behind the threshold of the Patan, the big iron gate, 2 little girls, Bobby and Dolly, go about their lives. This scene seems like it's from hundreds of years ago, but it actually dates back to 1956. It's one of my earliest memories in which I'm almost 4 years old. It's the street I remember the most, the street on which I lived. A little girl darts out of a house crying, "I want to go to my mama." "Come back," shouts my Sardi, my nanny, from inside the big gate. "No, I want to go to my mama." "Your mama has gone to the cinema. You get in here at once." "I will also go to the cinema," she retorts and runs down the street. Suddenly something stirs in the air. There's a muffled grunt in the sky and the breeze changes.
The sky turns red. Tin sheds begin to flap and rattle. The smell of wind on earth. It's a dust storm. Stray pieces of paper littering the ground outside the bookbinder's shop fly up and float in the air. Bicycles fall in a slow, studied motion along the wall of the cinema hall. The wooden shutter of Gyan Halwai's shop tilts and slips out of its clamp. He stands with his arms outstretched, holding it with all his Malai Lassi strength against the wind, his lungi threatening to fly off. A rickshaw puller pedals backwards and sideways. The world seems to slant at the edges. Dust storms the streets. My Sardi's voice cuts through the mayhem. Stop, I say. Get back, girl, it's dark. The girl is not coming back. She runs all the way to the end of the street and suddenly finds herself in the middle of Katra Sher Singh Chowk, in front of Regent Talkies, surrounded by huge cinema posters. The posters begin to tear from the whiplash of the wind. Surr, surr. Faces of actors and actresses fold up and slap against the dry whitewash of the decrepit wall. Unable to keep her eyes open from the dust, wind and tears, the little girl hides her face in her sleeve. At her feet swirl particles of dust, torn scraps of paper, bright orange and pink trimmings from the tailor's shop, and gather momentum. She stands still for a while, watching the little merry-go-round around her dotted rubber booties, until her eyes fall upon something. Across the street, the plotwala is doing a tandem. He is the skinny man who sells little leaflets with the plot and songs of Hindi films printed on them. A strong gust whisks away the sepia-colored leaflets from his hands and flings them into the wind. They soar in the air, going up and up in circles, dodging the poor man's attempts to retrieve them. Tossed into the wind, the yellow sheets somersault, now diving to his feet, now rising as if to sudden applause. He leaps and plunges by the side of the road, slapping his arms around, hurling himself at the musical notes. One leaf slips into two and two into four, till the songs dance above his gaunt, lanky frame. He dances with the songs, the poor plotwala, trying in vain to hang on to his only means of livelihood as it slips into grainy air. No one notices the little girl as she stands in the middle of the chalk, enthralled by the dance of the songs. Her large eyes filled with tears, but she forgets to cry. There you are, Marjani. My Sardi steps forward, scoops me up in one sweeping movement, lodges me onto her hip, strides down the street and puts me back inside the house where I belong. As we enter, my grandmother rises from her chair, pointing a finger at me. No little girls from good homes ever go out to cinemas on the street. Thank you. So this is my first memory, the visual that I remember first when I think of, when I hear the word childhood. Wow.